Uh, Hello, dear students. I welcome you all to the CadetsPrime's online platform again. There was some technical glitch, so it was not audible, I think. But now I'm audible, I'm pretty sure. So now, and sorry for the delay. Yesterday, English paper में discussion के दरमियान हमने काफी कुछ discuss किया था detailed paper analysis, right? So हमने देखा था किस तरह के questions हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस vocab सेक्शन से आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस स्पॉटिंग द एरर या एरर सेक्शन से आ रहे हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हमने देखा था कि vocab सेक्शन से हमारे काफी क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आते हैं, पिछले सालों में भी बहुत पूछे गए हैं। हमने 2-3 सालों का पूरा कंपैरिजन किया था, वी डिड एनालाइज इट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। थोड़ी सी बातें की हमने, एंटोनिम्स अराउंड 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर, सिनोनिम्स के भी 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, idioms के भी 15 to 10 questions, they vary, but again it is being asked. And spell correction, spelling के भी questions around 7 to 10 questions are being asked. और इसके अलावा ऑर्डरिंग द वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग द एरर के सारे। तो हमने वोकैब से डिस्कशन शुरू किया था अपना, राइट? और वोकैब के बारे में हमने बात की थी, किस तरह से हम वोकैब करते हैं, किस तरह से वोकैब करना जरूरी है। तुम्हें भी उसी इन्हीं तरीकों से, इन्हीं मेथड से पढ़ना है, जिससे कि वोकैब का जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के सामने, कि वोकैब याद नहीं रह पाती, और कई बार तो नए नए वर्ड्स समझ में आते हैं, राइट? इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर फ्यू वर्ड्स, but in the exam you find some new words. That is the challenge, right? And the bigger challenge is you cannot recall. So इन सारे challenges को कैसे एड्रेस करें, इस पे बात करते हुए हमने बात की थी कि रूट वर्ड और हिस्टोरिकल ओरिजिन से हम कैसे इस तरह से वोकैब पढ़ सकते हैं, लिंकिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है वर्ड्स को अपने माइंड में रखने में और यहाँ तक कि याद रखने में। लिंकिंग में हमने सारी बातें की थी, निमोनिक टेक्निक, थीम लिंकिंग, बैचिंग अप, ऑडियो विजुअल टेक्निक एंड अदर फनी लिंकिंग्स। एटिमोलॉजी हमने बात की थी कि इट्स बिगर, एनीवे इट्स बिगर सेट, एटिमोलॉजी इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो इसमें हमने थोड़ी सी बातें ये की थी किस तरह से रूट वर्ड्स के साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड होकर बहुत सारे शब्द बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि हमने रूट वर्ड के बारे में बात की थी, उसमें भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और हमने कुछ ग्रुप्स की भी बात की थी, किस तरह से होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, एपोनिम्स एंड ऑल। इफ यू अंडरस्टैंड दीज सिमिलैरिटीज, दीज काइंड ऑफ nuances in the vocab, so obviously it gets broadened. The vocab horizon gets broadened, one thing, and the second point, through these links you'll be able to keep that in mind for longer time. That's a bigger benefit. Now coming back to again, आगे भी हमने बात की थी, थोड़ा रीडिंग अगर हम करें प्लान्ड और गाइडिंग तरीके से, गाइडेड तरीके से, तो वो भी हमें हेल्प करती है। एंड देन वी स्टार्टेड, वी हैड फ्यू एग्जांपल्स, हमने कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन किया था कि जो मेथड मैंने बताया वो किस तरह से काम करता है। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इस तरह से, बट नाउ एंड वी also started doing few questions. Right, so the very first question, a paper tiger. It's again an idiom which has been asked in the previous year paper. So, a paper tiger, which option is correct? If you see, we have four options given here. Persons or organizations that appears powerful but actually is not. The second option is persons and organizations that acts like a tiger. And third option is people who campaign for the protection of tigers. And the fourth option is a daredevil. See, I gave you that idioms के केस में जो हमारा historical origin है, रिलीजियस कैरेक्टर्स या फिर रिलीजियस स्टोरीज, इवन रिलीजियस एनेक्डोट्स, इस तरह के बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो हमारे ईडियम्स को याद रखने में बहुत आसानी से बहुत मदद करते हैं। इसके लिए हमने एक दो एग्जांपल्स भी लास्ट क्लास में किया था। किक द बकेट का एग्जांपल हमने किया था। अब हमने एक और एग्जांपल किया था कि रैक हिज ब्रेन, रैक वंस ब्रेन। सो दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि अगर हमें थोड़ा सा भी उनका हिस्टोरिकल लिंकेजेस पता है, वेयर दैट ईडियम्स केम फ्रॉम, हाउ दे केम इनटू यूसेज, अगर हमें थोड़ी सी इन चीजों की आइडिया है, तो ऑब्वियसली वी कैन रिमेंबर थ्रू दैट लिंक। उस लिंक के जरिए हम उनको आसानी से याद रख सकते हैं, उनकी मीनिंग भी हमें याद रखती है। क्योंकि ईडियम्स के केस में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ईडियम्स में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनका लिटरल सेंस नहीं होता, जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो लिटरल सेंस से कुछ अलग ही होता है, राइट? सो एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस एनीवे इन द केस ऑफ ईडियम्स। लेकिन अगर हम हिंदी वगैरह की अपनी लोकल भाषा की ईडियम्स की बात करें, तो ऑब्वियसली वी आर फेमिलियर विद ऑल काइंड्स ऑफ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड एवरीथिंग, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज केम फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। तो इसमें जो माइथोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी है, माइथोलॉजिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो अलग अलग कल्चर से हैं। जो कुछ लैटिन है, कुछ ग्रीक है, कुछ जर्मन है, कुछ फ्रेंच है, that all kinds of influences you see. So जो idioms है हमारे, वो अलग अलग जगहों से लिए गए हैं और उसमें अलग अलग हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। अगर वो लिंक, वो कहाँ से आया idiom, ये हमें पता हो, तो हमें याद रखने में आसानी होती है।
सो पेपर टाइगर के केस में क्या है कि पेपर टाइगर वर्ड एक चाइनीज प्रोवर्ब से लिया गया है, जिसका मतलब होता है somebody who something who shows more powerful, who shows that he is powerful, he or she is powerful, that thing is powerful, लेकिन वो एक्चुअली पावरफुल नहीं है, राइट। सो उस प्रोवर्ब से, चाइनीज प्रोवर्ब से लिया गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया अब पेपर टाइगर के फॉर्म में। यहां तक कि कई बार हम जब इसके हिस्टोरिकल लिंक की बात करना शुरू करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि माओ जेडोंग के बारे में तुमने सुना होगा, स्टूडेंट्स ने सुना होगा, माओ जेडोंग वाज अ लीडर, चाइनीज लीडर। ही इवन मेंशन्ड मेनी टाइम्स in discussion with Western leaders, Western powers, that Chinese culture gave one word to English language, that is a paper tiger, and he actually used that word for Western powers. तो माओ जेडोंग ने ये शब्द वेस्टर्न पावर्स के लिए यूज भी किया था। वेस्टर्न पावर्स की अगर हम बात करें तो यू नो दैट यूएस एंड अदर कंट्रीज आर कॉल्ड वेस्टर्न पावर्स, सो ही यूज दैट वर्ड, दैट वेस्टर्न पावर्स आर पेपर टाइगर, तो कहने का मतलब इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि पेपर टाइगर का मतलब ये हुआ appears to be powerful but it's actually not. So the very first, first option is correct. You can see the very now the next one is lily livered. Again it's an idiom, right? अगर हम लिली लिवर्ड की बात करें एग्जैक्ट लिटरल सेंस की तो ऑब्वियसली कुछ और ही मतलब निकलेगा, और हम गेस भी नहीं कर पाते अगर हमें पहले से पता ना हो, और हम भूल जाते हैं अगर हमें मीनिंग एक बार हमने मगअप भी किया, क्रैम किया, तो वी एक्चुअली फॉरगेट द मीनिंग, राइट, क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमने ये लिंक जाना है तो वो लिंक हमारे दिमाग में इंप्रिंट हो जाता है एंड इट रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम। सो लिली लिवर्ड के केस में क्या है कि इन द मिडल टाइम, इन द मिडल मध्यकालीन समय में क्या था कि लिवर वाज कंसीडर्ड टू बी द सीट ऑफ करेज, right, seat of all the courage, the courage comes from liver, that was considered in medieval time, right। और लिली जो है थोड़ा सा पेल, थोड़ा धुंधला कलर होता है लिली, तो लिली लिवर्ड, तो लिवर अगर धुंधला हो गया, लिवर अगर गॉट पेल एंड ऑल, इट मींस इट डज नॉट हैव ब्लड, इसका सीधा मतलब द पर्सन इज नॉट करेजियस। सो लिली लिवर्ड इस तरह से इसका मतलब होता है somebody who is not brave or not courageous। इसी तरह से इसका लिंक कहां से आता है, अ मिडवल बिलीफ, एक मध्यकालीन जो मान्यता थी, जो विश्वास था। तो इस तरह से हर इडियम्स में कुछ ना कुछ लिंक है। सो इफ यू डिस्कस दैट विद योर कलीग्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर टीचर, एंड यू कीप यूजिंग दैट इन योर सेंटेंसेस, इट रिमेन्स देयर इन योर माइंड, राइट, क्योंकि धीरे धीरे यूसेज में आ चुका होता है, प्रैक्टिकल यूसेज में। सो एनीवे, नॉट ब्रेव, राइट। तो आज हम इसी तरह से दूसरे की बात करेंगे, ईट लाइक अ बर्ड। सो द नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज ईट लाइक अ बर्ड। सो यू हैव अगेन द ऑप्शन ईट फास्ट, eat very little, and eat a lot, and pretending to be eating, right? So eat like a bird, literal sense तो कुछ और ही है, right? अब ये कहाँ से आया, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? So eat like a bird का मतलब तो यही है कि eat very little, but this came that this was a belief that birds eat really, very little. But actually, if you consider their size, तो obviously ऐसा नहीं है कि they eat little. तो that eat से related कई सारे idioms इस तरह से आते हैं, eat like a bird, eat like a horse, eat a humble pie, कई सारे idioms देखे होंगे और ये सब एग्जाम में आते हैं यूजुअली क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी idioms है। सो eat like a bird का मतलब ये है somebody who eats very less, right? सो इसका आंसर तो काफी आसान भी है फिलहाल, लेकिन याद भी रहेगा, और इसी से रिलेटेड और भी कई सारे idioms हैं जैसा मैंने बताया, eat like a horse if you eat a lot, right? Eat a humble pie if you actually are forced to accept your own errors, अपनी खुद की गलती अगर आप फोर्सफुली यू एक्सेप्ट, दैट्स ईटिंग हम्बल पाई, ईटिंग हम्बल पाई। सो इस तरह से ईट्स के कई सारे इडियम्स हैं व्हिच वी यूज एंड व्हिच आर एक्चुअली आस्क्ड इन आवर एग्जाम, वो हाई फ्रीक्वेंसी इडियम्स है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, द डॉग डेज। अगला हमारा जो इडियम है दस द डॉग डेज। सो इफ यू अगेन इसकी मीनिंग अगर एक बार हम रट लें तो मोस्ट प्रोबेबली कई बार हमें भूल जाएगा। इसमें भी ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं, डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स, द नेक्स्ट ऑप्शन इज द बिटर डेज, थर्ड ऑप्शन है द हॉटेस्ट डेज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कोल्डेस्ट डेज, राइट। सो द डॉग डेज ईडियम इस तरह से आता है, फिलहाल तो डॉग डेज इज एक्चुअली द हॉटेस्ट डेज, दैट्स द मीनिंग, क्योंकि जुलाई के बिगिनिंग से लेके सितंबर तक का जो टाइम होता है दैट इज सीवियरली हॉट एंड वेरी पेनफुल। सो तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम है उसी को हम द डॉग डेज बोलते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? द डॉग डेज कम्स फ्रॉम बिलीफ, क्योंकि एक सीरियस स्टार होता है विच इज रियली द ब्राइटेस्ट स्टार विच एक्चुअली शाइन्स इन द टाइम ऑफ समर, समर के टाइम पे वो नाइट स्काई में इट एक्चुअली शाइन्स, सीरियस स्टार, राइट। तो ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीव था कि सीरियस स्टार की वजह से ही जुलाई के बिगिनिंग से लेकर सितंबर तक गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट, इट्स अनबेरेबल
एनीवे हीट, सो दैट्स द बिलीफ। और इसके अलावा ग्रीक माइथोलॉजी में सीरियस स्टार के लिए, जैसे सीरियस स्टार को ओरियन, हंट्समैन, ओरियन के बारे में अगेन एक ग्रीक कैरेक्टर है ओरियन, जिनको ग्रो ओरियन को हंट्समैन माना जाता है। ही वाज अ फेमस हंट्समैन, ही वाज अ वेरी ब्रेव हंट्समैन। तो उसका उसका हाउंड माना, हाउंड मतलब जंगली डॉग्स, तो उसका हाउंड सीरियस को कंसीडर करते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। तो ये वहीं से आता है कि अब सीरियस जो स्टार है उसको कंसीडर किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ सप्तऋषि मंडल हम देखते हैं कई सारे स्टार्स का कॉन्स्टलेशन को हम सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। उसी तरह से कुछ स्टार्स का जो कलेक्शन है, कॉन्स्टलेशन है, उनको ग्रीक माइथोलॉजी में ओरियन से अ, एक तरह से रिलेट किया जाता है। तो जो सीरियस स्टार है उसको ओरियन का हाउंड बोला जाता है। हाउंड मीन्स काइंड ऑफ शिकारी कुत्ता ऐसा कुछ। तो वहीं से डॉग आता है। तो ग्रीक में उसको क्यों बोला गया, क्यों, KYON, और उसका मतलब डॉग। और वहीं से डॉग डेज आता है, बिकॉज दे कंसीडर्ड कि ये स्टार ही रिस्पॉन्सिबल है इतनी गर्मी के लिए, राइट? सो दे नेम्ड दैट, दैट्स वेयर द डॉग स्टार केम। तो उसी को डॉग स्टार भी बोलते हैं। इस तरह से सीरियस स्टार को, उस तारे को डॉग स्टार भी बोलते हैं। और उसी की वजह से गर्मी होती है ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा मानना है, ऐसा बिलीफ होता था। और इसीलिए द डॉग डेज, सो दोज डेज व्हेन दिस सीवियरली हॉट, those days, and just because Sirius star, the dog star was responsible for that, इसलिए उन दिनों को क्या बोलते थे, द डॉग डेज। ऐसा नहीं है केवल डॉग ही परेशान होते हैं और सीवियर गर्मी से, सबको परेशानी होती है, बट लेकिन इसका जो ओरिजिन है ये वहीं से आता है, द डॉग डेज मीन्स द सीवियर हॉटर डेज। सो एनीवे द हॉटेस्ट डेज, सो दैट्स द आंसर, राइट? सो थोड़ा सा याद तो रहेगा ही कि किस तरह से सीरियस स्टार कैसे है, उस जुलाई से लेके उस तक नाइट स्काई में शाइन करता है। इट्स ब्राइटेस्ट स्टार एक्चुअली। और उनका जो पूरा, जिस तरह से हमारे यहाँ सप्तऋषि मंडल एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, और भी कई इसी तरह से ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उनकी अपनी रिकग्निशन है एंशियंट टाइम में, वैसे ही ग्रीक एंशियंट टाइम में, ग्रीक माइथोलॉजी में उस पूरे कॉन्स्टलेशन को, उस पूरे ग्रुप को एक तरह से ओरियन से रिलेट करते थे। ओरियन यूज्ड टू बी अ हंट्समैन, वो उनकी माइथोलॉजी में एक हंट्समैन होता था। तो उसका जो हाउंड के लिए सीरस को कंसीडर किया जाता था, इसीलिए उसको द डॉग स्टार बोलते हैं। और द डॉग स्टार से क्या आ गया फिर, द डॉग डेज, एंड दैट्स हाउ दिस वर्ड केम इनटू यूसेज। अब इसका डायरेक्ट कोई द डॉग डेज से इसका मतलब नहीं है कि बस गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो केवल डॉग्स ही परेशान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? So if you know a little bit this history how this came into uses, so obviously you remember that डॉग का डॉग स्टार से रिलेशन है, और इस तरह से इसको द डॉग डेज बोलते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, a banana republic, right? Another one again, these all are the high frequency idioms. See, जबकि इसमें से कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पिछले साल पूछे गए 2020 में। तो सोचो जो हमारे idioms आते हैं 10 to 15 idioms, that most of the idioms which are asked in our paper, that is high frequency idioms. So if you're really ready with these, these all 500,000 idioms, and that too with the links and all, it will be there in your mind, and you can mark the answer very quickly. It takes only 10, 10, 15 seconds, not more than that. A banana republic. इसके ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है स्मॉल एंड पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन है a small and poor country which produces banana. Third option is a country which has been occupied by a big country. And fourth, a country without any government. A banana republic again comes from history. Uh, there's a writer O Henry, तो उनकी बुक से आता है बनाना रिपब्लिक, बिकॉज ही वॉज लिविंग, उन्होंने कुछ दिनों तक वो होंडुरास वगैरह के आसपास रहे थे, जो कि मिडिल अमेरिकन कंट्रीज है, मिडिल उसमें, जहाँ पे आपका एल साल्वाडोर वगैरह है, वहाँ पे होंडुरास भी वहीं पे है। तो उन कंट्रीज में वो कुछ दिन तक रहे थे मिस्टर ओ हेनरी। तो अपने उन कंट्रीज में उनका जो एक्सपीरियंस था, उसी के बारे में ही रोट अ बुक, राइट? सो देयर इन दीज स्मॉलर कंट्रीज क्या होता क्या था, जो यूएस की फ्रूट कंपनीज थी, दे यूज्ड टू यू नो they were into the exploitative behavior there in these countries। और उनके एक्सप्लॉयटेशन के, उनके एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर में द वर्स्ट पार्ट ये था कि जो वहां का रूलिंग क्लास था वो इन्वॉल्व था, राइट? बट द होल पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, राइट? दैट वाज द कंडीशन ऑफ दीज कंट्रीज। तो वहीं के एक्सपीरियंस को के बारे में लिखते हुए और हेनरी ने अपनी बुक में इस तरह से इसको मेंशन करा है, इस वर्ड को यूज किया है, अ बनाना रिपब्लिक फॉर दोज countries and those smaller places, right? तो कहने का सीधा मतलब है कि the government is in cahoot with corrupt people, and they're not taking care of their people, the group of people who are ruling, वो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, और वो करप्शन में बिल्कुल लिप्त है। मतलब उनकी एक तरह से प्रशासन पे कोई उतनी पकड़ नहीं है।
जनता बिल्कुल परेशान है, वीक गवर्नमेंट है। इस तरह से इसका सेंस यही हुआ, अ स्मॉल एंड पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, क्योंकि उसी उन्हीं वहां की जो कंडीशन थी उसी के लिए ओ हेनरी ने इस वर्ड को यूज किया था। एंड देन दिस इज नाउ a prevalent word, is used everywhere. Even in India, many times you see people, politicians using this word for opposition party or the ruling party. They keep doing that, whoever is in power. So a banana republic, इस तरह से बनाना रिपब्लिक का सीधा मतलब हुआ पुअर एंड स्मॉल कंट्री, या स्मॉल एंड पुअर कंट्री विद वीक गवर्नमेंट। एंड इवन यहां तक कि जो कि गवर्नमेंट या रूलिंग क्लास केवल दे आर ओनली लुकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, एंड दे कंप्लीटली इन्वॉल्व इन करप्शन एंड ऑल, इस तरह से। क्योंकि वहां की कंडीशन ऐसी थी, जो यूएस की फ्रूट कंपनीज होती थी उनके साथ अब बनाना और दूसरी चीजों को उगाने के लिए जितने भी वहां की जनता पॉपुलेशन जो थी, दे ऑल वर एक्चुअली वर्किंग वर्किंग क्लास, दे वर एक्सप्लॉइटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज फ्रूट्स। तो उन्हीं उन कंडीशंस को दिखाने के लिए उन कंट्रीज के लिए ये वर्ड यूज किया ओ हेनरी ने, अ बनाना रिपब्लिक। तो ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री में है जहां पे द रूलिंग क्लास, सेट ऑफ पीपल एक्चुअली आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर एनी बाय एनी मींस, एंड कीपिंग द मासेस पुअर, और जनता को गरीब रख रहे हैं, और कुछ रूलिंग क्लास सेट ऑफ लोग हैं जो हु एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, इवन दे आर इन कहूट विद द करप्ट पीपल, बी इट इनसाइड द कंट्री आउटसाइड द कंट्री। तो ऐसी चीजों के लिए बनाना रिपब्लिक शब्द यूज होता है। तो इसी तरह से अ बनाना रिपब्लिक, अ स्मॉल अदी पुअर कंट्री विद वीक गवर्नमेंट, दैट्स द आंसर हियर। So obviously you won't forget it, कहां से आया है, इतनी बात समझ में आई, इसी तरह से यूज हुआ है ये वर्ड। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, द प्रोज एंड कॉन्स, खूब यूज होता है, वी ऑल नो दैट। एनीवे, द प्रोज एंड कॉन्स, सी इतने हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स अभी रिसेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इसका सीधा मतलब है, इफ यू आर रेडी, अगर हमने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स भी हमने इस तरह से डिस्कशन के जरिए करा हुआ है, तो दैट विल नॉट फॉरगेट इट, हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर जो ईडियम्स हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स हैं। So the pros and cons, the options are the good and bad part of a situation, like and dislike of a situation, a bad experience in an event, a good moment of an event. See, pro and con, ये दोनों ही वर्ड अगेन रूट वर्ड्स हैं, राइट। एक का मतलब प्रो का मतलब ही होता है फॉर, एंड कॉन्स का मतलब होता है अगेंस्ट, राइट। सो अगर हम उतना भी हमें इतनी बात पता है, रूट वर्ड में भी हम इन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो विच वन इज दैट? A good and bad part of a situation. That is the pros and cons. So you'll remember that. Again, it comes from the root word. Now, coming back to next one, prime the pump. So another idiom is to prime the pump. That's not very general, very frequent. But again, let's see which one is the answer. To do something in order to make something succeed. Next one is to do good things to succeed in life. Third option है to do something in order to get bad things done. And fourth option is asking people to do things to make something succeed. Right. Now, pride in the pump के बारे में अगर हम बात करें, where this idiom comes from, so this actually earlier, you know, a liquid used to be used. कुछ liquid use करते थे पंप से, अगर water या कुछ चीज नहीं निकल रही है, तो they used to fill that so that the air will be expelled, जिससे कि उस पंप से air expel हो जाएगी। Another liquid is used to be poured in. लिक्विड को पोर इन करते थे पाइप पंप में, जिससे कि एयर एक्सपेल हो जाए, एंड दैट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, वो फिर से काम करना शुरू कर दे। दिस यूज्ड टू बी डन, right, in the ancient time, in the earlier time. But later on, what happened, in order to rejuvenate the economy, right, in order to start the economy, in order to uh, restart the economy, the country makes some efforts. कोई भी देश जो एफर्ट लगाता है, इन सेंस में भी कई बार यूज होने लग गया प्राइम द पंप, राइट। तो कहने का मतलब, टू मेक एनीथिंग सक्सेसफुल, succeed, so all those efforts which you put in, जो हम एफर्ट लगाते हैं किसी चीज को सक्सीड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन सारे उस एफर्ट और उस प्रोसेस के लिए प्राइम द पंप यूज होता है। आया कहां से द प्राइम द पंप? सो पंप में क्या करते थे, लिक्विड पोर इन करते थे, जिससे कि एयर एक्सपेल हो जाए, एंड दैट स्टार्ट्स फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। दैट यूज्ड टू बी डन, एंड दैट इज वेयर दिस कम्स फ्रॉम, प्राइम द पंप। सो द मीनिंग, which one is the most appropriate answer here? The meaning of this idiom? Yes, next one. To do good things to succeed in life. That's the answer. Now, coming back to next one, the green-eyed monster. The green-eyed monster. So again, the options are feeling of being joyous. The other one is feeling of being jealous. And the next third one is feeling bad about some happening. And the fourth option is feeling lucky about something. See, green color is associated with jealousy.
traditionally, right? So इस तरह से the green eyed monster, अगर हमें इतना भी पता है कि green color traditionally in the many mythologies and even the historical anecdotes and examples, this green color is associated somehow with jealousy. So now on that basis also you can go for the meaning, feeling of being jealous. That's the sense, the green eyed monster. Now coming back to the next one, rise to the occasion, right? Rise to the occasion, again the very frequent one, जो कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में. To celebrate a success in a different situation, to regret a situation which ended in failure, to succeed in dealing with a difficult situation, to motivate people to succeed in difficult situation. Rise to the occasion, right? uh, Someone who was not performing well, but at the time when it was most needed, it was really important. That time, out of the way, he just came up with his complete might, and he actually performed really well. That situation is called rise to the occasion. Occasion पे जब जरूरत थी, you're not doing some good things, but again you performed well, तो उस सेंस के लिए हम rise to the occasion यूज करते हैं. इससे भी बहुत सारे idioms बनते हैं rise से. Now the best answer will be yes. So to succeed dealing with the difficult situation, that is the meaning. Now, so perform well in the difficult situation. Next one, call it a day. Again, the options are given: end of the day, completion of the work, stop doing something, and a beautiful day. Call it a day. The sense meaning is stop doing something. So if you when you call it a day, you're doing something, and you call it a day, it means you stopped doing that work, whatever you're doing, right? So stop doing something, that is call it a day. Call से भी इस तरह से कई सारे idioms हमारे बन रहे होते हैं ना. सी अभी तक हम थोड़ी सी वोकैब की बात कर रहे थे, वोकैब हम किस तरह से पढ़ेंगे और वो मेथड्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं. अब हम थोड़ी सी बात करेक्ट यूसेस के बारे में करेंगे, एंड देन विल ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली कीप डूइंग द क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प अस. अब अगर हम करेक्ट यूसेस की बात करें, हमने पीछे भी एनालिसिस की थी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं करेक्ट यूसेस में. स्पॉटिंग द एरर, एरर फाइंडिंग, 10 questions, right? Error finding, most of the time students find it difficult. जैसे करते समय तो सब कुछ जब हम टॉपिक वाइज आंसर्स करते हैं, so हमें सारी बात समझ में भी आती है और हम आसानी से क्वेश्चंस भी कर पाते हैं. बट व्हेन इट कम्स इन एग्जाम, जब एग्जाम में आता है, देन वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि कौन सा वाला रूल या कौन सा वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा. And that is the reason we are not able to mark. Most of the time this happens with the student. See, what happens, मैकेनिकल तरीके से रूल की तरह पढ़ना इज नॉट एडवाइजेबल. डोंट डू दैट, क्योंकि उससे जो बहुत ही ज्यादा इस तरह से कुछ रूल्स होंगे which really leave some impact on your usage on your brain, that will be there in your mind for longer time. बाकी के सारे रूल्स जो थोड़े लेस इफेक्टिव से, या हम कंसीडर करें कि वो उतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे वो रूल्स, या उतना ज्यादा हमारे दिमाग में उनका कुछ स्ट्राइक नहीं किया, वो सारे के सारे रूल्स हमें भूल जाएंगे, या तो भूल जाएंगे या फिर मिक्सअप हो जाएंगे इधर उधर. Mess up everything, there will be a chaos, you cannot remember that all. So the best part is, जितने भी करेक्ट यूसेज के पॉइंट्स हैं ग्रामर के, उनका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि दैट यू डिस्कस वन बाय वन and bring that in your practical uses, right? That is called applied grammar, application based grammar. Don't study this way, that rule number 1 and then two examples, then rule number 2, then three examples. इस तरह से पढ़ना एडवाइजेबल नहीं है. ऐसी बहुत सारी बुक्स मार्केट में है जिसमें आसानी से रूल नंबर 1, रूल नंबर 15, रूल नंबर 20 लिखा हुआ है, राइट? सब कुछ अवेलेबल, इट्स वेरी हैंडी, यू जस्ट पिक इट एंड स्टार्ट रीडिंग. अगर ऐसा होता कि वी डू दैट, बहुत आसान भाषा में लिखी होती हैं बुक्स, किताबें, बहुत सारी बुक्स हैं इस तरह से मार्केट में, राइट? अशोक कुमार सिंह और बहुत सारी इस तरह बुक्स हैं. अगर इतना आसान होता कि हम उसे हिंदी में पढ़ें, इसके साथ इसका उपयोग किया जाता है और फिर नीचे दो एग्जाम्पल, और वो हमारे दिमाग में रहता, हमें याद रहता, फिर तो कितनी अच्छी बात थी. इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, हम आसानी से करते उन्हें, और वी कैन कीप दैट इन आवर माइंड. बट दिस इज नॉट सो इजी, वर्स्ट पार्ट इज दैट वी फॉरगेट इट. दो चार रूल्स जो बहुत ही इंपैक्टफुल है वो हो सकता है हमें याद रहे, बाकी सब भूल जाता है, और उसी को सबसे ज्यादा हमें, उसी चैलेंज से हमें निजात पाना है. सो द बेस्ट पार्ट इज you start working on applied grammar, application based grammar. That's how you study. So now, matlab कहने का ये, that's how we actually do that in the class, in the conversational manner, in the application based, with the application based method. So this is how you need to do. ऐसे ही करना है, this is the best method.
और इस तरह से होता क्या है, हमारी खुद की स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होती है, रिटन इंग्लिश इंप्रूव होती है और हमारा सारा वो जो करेक्ट लैंग्वेज के यूसेज है उससे हमारी फेमिलियरिटी ही नहीं, हमारे प्रैक्टिकल यूज में आ जाता है अननोइंगली, धीरे धीरे। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन वंस इट इज डन, द जॉब इज डन। मतलब तुम्हें एफर्ट तो लगाना ही नहीं है टू रिमेंबर दैट, टू कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू डू नथिंग, इट ऑलरेडी ऑलरेडी केम इनटू यूसेज। यही किस तरह से हमें पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे करेक्ट यूसेज या ग्रामर की बात करते समय देखा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर, जो कि हम सबको पता है, 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस कभी कभी अपीयर होते रहते हैं हमारे सीडीएस के पेपर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू हैव टू आइडेंटिफाई, right, which one is relative, which one is relative pronoun, which one is participle, what is this verb, that verb, these kind of questions। मतलब हमें ये बात भी पता होनी चाहिए, grammatical profile of the word, मतलब हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कितने एडजेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, कोई वर्ड कहाँ पे है। एनीवे द ग्रामर इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड एंड देयर कॉन्टेक्चुअल सेंस, राइट। सो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही उनके नाम भी बदल जाते हैं। सो वो भी पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट बी फेमिलियर कि व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द प्लेस, एंड अकॉर्डिंगली नेचर क्या है वर्ड का, ग्रामेटिकल प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस अगेन, राइट, इस तरह के भी क्वेश्चंस अपीयर होते रहते हैं हमारे पेपर में। रिपोर्टेड स्पीच के भी क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आते हैं, right, again that is grammar, right, correct uses। Parajumbled, parajumbled, you know that what is parajumbled, it could be ordering of words or ordering of sentences, right। So ordering में हमें इस तरह से हम जनरल बातें तो बहुत कर लेते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, obviously you just have to keep that in mind that उनसे हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। और भी ऐसी कई सारी बातें तुम देखते हो कि कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, मैंडेटरी पेयर्स बनाओ। इन सब चीजों के बाद भी किन वर्ड से कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंडेटरी पेयर्स बनाते समय कौन से वर्ड के बाद, कौन से सेंटेंस के बाद दूसरा कौन सा सेंटेंस होगा, ये पहचानने में हमें ग्रामर जो है बहुत मदद करती है। अगर हमें समझ है ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स वर्ड्स के की, तो हमें आसानी से समझ में आएगा अगर प्रोनाउन आया है तो किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा, एंड देयर मस्ट बी नाउन यूज्ड इन सम अदर सेंटेंस, राइट। सो विल बी एबल टू फाइंड इट आउट इस तरह से। और इन सब तो पैरा जंबल में भी हमारी ग्रामर बहुत हेल्प कर रही होती है। कमिंग बैक टू ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग किसी तरह की भी हो, चाहे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। नाउ कमिंग बैक टू क्लोज टेस्ट। सी क्लोज टेस्ट भी फिलर्स की तरह, जैसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वैसे हमारे क्लोज टेस्ट भी, देयर विल बी अ स्मॉलर पैराग्राफ और उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होंगे, वो करना होता है। सारे बच्चे फेमिलियर हैं इस बात से। अब उनको भी सॉल्व करने के लिए हमें तीन तरह की बातें चाहिए। One, obviously vocab. Words we have to be familiar with, right? We must be knowing words, their sense, their meaning, their contextual uses. That all has to be there. Contextually उनकी meaning किस तरह से differ करती है. And the second point, grammatical uses. Grammar, grammatical profile of those words, how they function in the sentence, what is their placement in the sentence. All right? So these all both things will be tested in closed test. So closed test में दोनों ही बातें हमें ध्यान रखनी होती है, मतलब कहने का हमें correct uses भी समझ में आनी चाहिए, then only we'll be able to do closed test properly. So ये तो हुए क्वेश्चंस जो हमारे सीडीएस के एग्जाम में आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज द अप्रोच, सी द ट्रेडिशनली हम जिस तरह से ग्रामर या करेक्ट यूसेज पढ़ते रहे वो क्या है, क्रैमिंग, मार्किंग अप, इतने रूल्स प्रोनाउन में है, इतने नाउन में है, इतने वर्ब्स में है, 10-15 रूल्स, एंड यू स्टार्ट मार्किंग अप, क्रैमिंग एंड ऑल। इसके साथ इसका उपयोग नहीं होता है। एंड देन टू एग्जांपल्स, सी मैंने पहले बताया कि डोंट डू इट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत लिटिल बेनिफिट होगा, ना के बराबर, राइट। फ्यू, अब दो तीन तो कई बार एक बार सुनने से भी हमें याद रहते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रेन। कई बार तो कुछ ऐसी चीजें भी हमें याद रह जाती हैं, एक दो चीजें जिनका कहीं कोई लिंक नहीं होता। तो ऐसे एक दो रूल अगर हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद याद रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सारे के सारे ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस तरह के, जितने भी करेक्ट यूसेज के पॉइंट्स हैं, दैट हैज टू कम इन आवर प्रैक्टिकल यूसेज, राइट, दैट हैज टू कम इन आवर एप्लीकेशन। एंड एनीवे, सो इस तरह से क्रैमिंग और मार्किंग अप इज नॉट गोइंग टू हेल्प, सो डोंट डू इट। So it's not recommended. That is that students used to do that earlier time। क्योंकि पहले होता क्या था कि कम क्वेश्चंस होते थे, कंपटीशन कम होता था और एक ही लाइन पे, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब ऐसा नहीं है, there are changes happening। So new type of questions are coming, एग्जाम्स के लेवल हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग, in the every competitive exam you see, they all are improving, they're going upwardly, right, upwardly movement is there। so obviously अब पहले जैसा नहीं रहा कि एक घिसे पिटे पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर कुछ रूल्स रट भी लिए तो उनसे हमें आसानी से क्वालिफाई करने भर का क्वेश्चंस मिल जाता है, ऐसा अब नहीं है। So you cannot do this traditional approach, right? Anyway, so complete no to it, don't do it, that's not beneficial।
जितने टाइम, जितना एफर्ट इन चीज में लगाओगे उससे बेहतर है कि जो इनोवेटिव तरीके हैं एप्लीकेशन बेस्ड उन पे काम करो, एंड दैट विल इंप्रूव योर ओवरऑल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, राइट? नाउ, so our innovative methods which we do, innovative conversational and practical method, as I said, we discuss with our students, we pick one word and their grammatical profile, their uses, their placements, everything, how they differ, how their meanings differ, how their name differ, uh, on the basis of the placement and sense, what is the contextual usage which actually is different in different contexts. ये सारी बातें you have to discuss that and use it, make sentences then and there, and obviously that's the conversational and practical method. An application based approach, इसी को हम बोल रहे हैं application based approach, because you are applying it all in the proper, anyway we are studying language, right? हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारी डेली यूसेज में नहीं है, ये तो हमारे डेली यूसेज में हमारे चारों तरफ इंग्लिश है, you're reading books, you're reading magazines, you're reading newspaper, you're listening to news, even the movies वगैरह में आजकल 30-40% वर्ड्स इंग्लिश के ही होते हैं, you watch movies and serials and everything, right? So कहने का मतलब ये हमारे चारों तरफ इंग्लिश है, और हम आसानी से अगर हम ये एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड ग्रामर तरीके से हम इसको पढ़ें, so that will come in our application, that will come in our uses very soon, and that's going to be anyway helpful for whole our life. You're going to be a defense personnel, you're going to be an army official, right? A commissioned officer, and later in life also, anyway, I mean, you'll be working in the same language, right? You'll go for the higher studies, you'll do a lot of things, and there the language will be always handy. So whatever the effort you're putting in now, it will be beneficial in the exam plus afterwards, after in the life, right? So that will be there. So afterwards in the life, so that's beneficial. So this is the approach we'll be using. Dive deeper करके मैंने एक चीज और लिखा है, nitty gritty of sentence structure. See, क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि प्रैक्टिकल यूसेज के साथ साथ हमें इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। निटी ग्रिटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, सेंटेंसेस में कौन कौन से पार्ट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, यू आस्क एनीबॉडी, they might tell you the meaning of the word, meaning of the sentence contextually इस तरह से पढ़ने के बाद, but the moment you ask what is the profile of this word, what is this word doing here, then they are blank because they don't know it. So nitty gritty of sentence structure, बीच में कोई चीज किस तरह से यूज हुआ है, you must be knowing that, right? And then parts of it, parts of all the sentences, parts of the sentences, you must be knowing that as well. Phrases, right? What are the phrases there anyway? There are many phrases, and the clauses, सारे clauses किस तरह से बीच में आ रहे हैं, noun clause, adverbial clause, adverb clause, adjective clause, और उन clauses का क्या sense है, किस लिए इस तरह से sentence form हुआ है, you must be familiar with that. And once you familiarize yourself with the teacher, later on, whenever, whatever you're reading, that will keep coming in your mind because it's everywhere, right? If you read newspaper, it's everywhere, right? In between the clauses are there and they have this specific sense, right? So ये बहुत ही काम की चीजें हैं और इनका प्रैक्टिस भी होता रहता है, इनसे हमारी रीडिंग भी इंप्रूव होती है. So obviously you have to dive deeper. So innovative method, conversational and practical method, application based approach, and then you have to go for the nitty gritty of the sentence structure, parts, phrases and clauses. You must do it, and obviously their functions. उस clauses का, उस किसी specific clause का क्या मतलब है, क्या sense है, right? Coming back to going extra mile, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स, ऑब्वियसली वो सारे पार्ट्स हमें पहचान में भी आने चाहिए, सेंटेंस में कहीं पे भी हो. फ्रेजेस भी पहचान में आने चाहिए, समझ में आने चाहिए. क्लॉजेस भी. इन दी रिटन पैसेजेस, जितने भी रिटन पैसेजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, और उनके कंटेक्चुअल मीनिंग और कॉलोकियल यूसेज, बहुत सारे कॉलोकियल यूसेज भी होते हैं. कॉलोकियल मतलब कुछ गुड ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं एंड दे गिव यू अ स्पेसिफिक सेंस, राइट? अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि तुम्हारा लॉजिक भी यूज नहीं होता वहां पे, क्यों ऐसा है, राइट? सो that colloquial usage also you have to familiarize yourself और उनके भी क्या सेंस है, राइट? जैसे फास्ट फूड, क्विक मील. अब कई बार यू माइट आस्क सर फास्ट का भी मतलब तेज है, क्विक का भी मतलब तेज है, तो फास्ट फूड और क्विक मील दोनों में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? That's how we use it, right? There is a lot of things. So anyway, इस तरह से बहुत सारे colloquial uses हैं which you have to pay attention to, that those group of words come together and they have a specific sense, contextual sense everywhere, right? So you have to pay attention to that as well. So grammar, जैसा मैंने बोला, application based approach के साथ हमें करना है, and that will remain in your mind always, right? Now coming back to हम कुछ questions करेंगे, right? Just a second. Now, so the
स्पॉटिंग द एरर्स अगेन, ये क्वेश्चंस भी पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स में, हम इनको देख के हमें समझ में आएगी बात कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. So each item in this section has the sentence with three underlined parts labeled as A, B, and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter. That is to say A, B, or C. And if you find no error, your response should be indicated as D. See, I've read this instruction. See, you too keep reading the instructions at least when you're practicing. क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता. So if you're familiar with the instructions, right, so immediately you'll find the keywords in the instruction and you'll not make the mistake. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन भी गलत तरीके से पढ़ने की वजह से हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं. ऐसा बहुत एग्जाम में होता है. और बैंक के एग्जाम में स्टूडेंट्स तो काफी ये मिस्टेक करते हैं. तो इससे बहुत एग्जाम में होता है कई बार, बिकॉज यू हैव द हैबिट ऑफ इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शन. So if you don't even, you never read the instructions, you're not familiar with the keywords, so it will be difficult. Most probably you'll ignore the instruction in the exam as well. और गेस कर लोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा बोला गया है, बोला कुछ और गया होगा. मोस्ट नियरली सिमिलर ना बोल के मोस्ट नियरली ऑपोजिट बोला गया है, एंड यू स्टार्टेड फाइंडिंग द सिमिलर क्योंकि ऑप्शन में भी सिमिलर था, एंड यू फाउंड इट एंड मार्क्ड इट. राइट, ऑन द सिमिलर लाइन बहुत तरह से इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट लाइकली नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. मोस्ट लाइकली नॉट ट्रू. अब चूंकि हम अगर कीवर्ड से फेमिलियर नहीं है तो नॉट ट्रू हमसे मिस हो सकता है, एंड वी माइट कमिट मिस्टेक्स. इसलिए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग द मॉक टेस्ट, व्हेन यू आर डूइंग द टेस्ट सीरीज, make it a habit that you read the instruction. It brings that all the keywords you become familiar with. तो एग्जाम में कम से कम वो कीवर्ड मिस नहीं होंगे इंस्ट्रक्शन में. पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन कीवर्ड्स पता चल जाएंगे करना क्या है इस क्वेश्चन में. राइट, इमीडिएटली योर माइंड, आईज विल गो देयर ओनली. दिमाग वहीं पे जाएगा, आंख वहीं पे जाएगी जो कीवर्ड्स होंगे. सो दैट्स रियली बेनिफिशियल. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस. आ जाओ, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका है कि these are the four part of the sentence and you just have to find the error wala part, and if there is no error then mark the D, no error answer. So the very first sentence is, after mysteriously expanding for decades, the Antarctica's sea ice cover starting melting. What? The moment you read it, after mysteriously expanding for decades, Antarctica's sea ice cover starting melting. Starting, what starting is doing here anyway, right? Starting, so ing words can be used either with a helping verb when they're used as a verb. अगर verb की तरह यूज हुए हैं तो किसी helping verb के साथ यूज हुआ होगा. We all know that either continuous or perfect continuous, या फिर वो participle की तरह यूज हुआ है तो हमें पता है उसका एक प्रॉपर पूरा फ्रेज होना चाहिए साथ में. यहां तो ऐसा कुछ है नहीं. So Antarctica's ice cover started, that's what has to be there. So there is an error in C part, right? Now, so the next one, each item in this, again the similar thing is there. Each item in this section has the sentence with three underlined parts labeled A, B, C. तो error find out करना है, और अगर error ना हो तो D mark करना है. Look for this one, read it. Anyway, so it has to be Antarctica sea ice cover तो हो गया हमारा C. Yes, next one. So the auction conducted by the bank, the auction conducted by the bank will be price based, will be price based using multiple priced method. Multiple priced method. So if you see in the very A part, the auction conducted by the bank is fine, right? Because participle वाला पूरा हमारा ये phrase है. So the auction, comma से separated है. The auction conducted by the bank will be priced. अच्छा, conducted यहाँ देख के किसी को परेशान नहीं हुआ है, होना है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है. जैसे I give you a sentence. कई बार students gets confused. The statement given by the politician was false. होता क्या है, मान लो this portion is given by, this portion is underlined, और improvement में क्वेश्चन पूछ लिया. कई बार ऐसा होता है. So given by, was given by, is given by, these kind of options are given. So students are really confused कि given is third form. ऐसा देखते ही स्टूडेंट्स के मन में कई बार ये आता है नहीं तो पैसिव होना चाहिए. Was given by, were given by, is given by, they start looking for these options, right? But this is not the case.
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पार्ट्स, phrases and clauses you must be familiar with, right? So अगर हम familiar हैं पार्ट्स, फ्रेजेस, सेंटेंस में किस तरह से फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, उनका क्या सेंस होता है, और क्लॉजेस भी, तो हमें ऐसी जगहों पे हम गलतियां नहीं करेंगे. विल नो दैट गिवन इज हियर अ पार्टिसिपल, दैट्स हाउ इट इज यूज्ड. इट्स नॉट अ पैसिव फॉर्म दैट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ वर्ब. तो इंप्रूवमेंट में हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे. द स्टेटमेंट वाज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट? गिवन बाय द पॉलिटिशियन. सो कंप्लीट गिवन बाय द पॉलिटिशियन इज अ, again, phrase, right? It's an adjective phrasing. It's a participle. That's what you can say. So in the similar line, the auction conducted by the bank will be priced. So conducted, again, is fine. Conducted by the bank will be priced, price based, using multiple priced method. But this priced is not correct, क्योंकि यहां पे इस priced की जरूरत नहीं है. Multiple price method, दैट्स व्हाट इट शुड बी, बिकॉज दिस ईडी इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर किसी भी तरीके से. ना तो यहाँ इस तरह से वर्ब की जरूरत है, और ना ही यहाँ पे किसी पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म की जरूरत है किसी भी फॉर्म में. सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो द एरर इज इन दिस सी पार्ट. Obviously you know that this priced should not be there. Priced ed लगा हुआ थर्ड फॉर्म हमें कब कब जरूरत है हमें पता है, राइट? ईदर इट इज यूज एज अ वर्ब, ईदर एक्टिव फॉर्म, राइट, सिंपल पास्ट, या फिर पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है. तो इन दो जगहों पे हमें चाहिए होगा ईडी वाला वर्ब का फॉर्म, या फिर हो सकता है पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है. अगर इन बातों से हम बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर है, दिस प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर एनीवे, राइट? सो यू विल बी श्योर, यू नो. कमिंग बैक टू नेक्स्ट. Now, next question, you see the instruction is same again, that these item of the section is sentences with three underlined parts are given, leveled A, B, C, D, A, B, C, and if there's no error, then you mark D. That's the instruction. Coming back to the question, the A part says if the scheme would have been implemented effectively, all affected would have benefited, no error, right? So see, the moment you see the sentence, if the scheme would have been implemented effectively, all affected would have benefited. Would have, right? तो इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि this is a conditional sentence, right? And if you studied conditional sentences properly, you know 3-4 types of conditional sentences, how they are made. A normal condition, a possible condition वाला किस तरह से बनाते हैं, not possible, imaginary, contrary to fact वाले conditions के sentences किस तरह से बनाते हैं, right? और past में अगर ऐसा कुछ रहा हो which was not possible, which was contrary to fact, इस तरह की conditions को हम किस तरह से sentences बनाते हैं. और इसके अलावा इन्वर्जन वगैरह किस तरह से होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में. यही 2-3 बातें होती हैं जो हमें सीखनी होती है कंडीशनल सेंटेंसेस में. इन्हीं पे एरर्स भी होते हैं, इन्हीं पे गलतियां भी पूछी जाती हैं हर एग्जाम में. एवरी एग्जाम, यू नेम इट, these are the points which are asked, right? So if you're familiar with the nature, with the formation of conditional sentences, you'll be pretty much familiar that ये would have दो बार कर क्या रहा है यहाँ पे, immediately you'll pick it, right? So would have आते ही हमें पता है past conditional में use होता है when contrary to fact sentences, when contrary to fact conditions are there in past which did not happen, which could not be fulfilled, those kind of sentences तो हमें पता है, right? So if the scheme would have been implemented effectively, no. If the scheme had been implemented effectively, that's how you say, right? If I had been there, I would have helped you. If I had been there, that's how you say. You never say if I would have been there, I would have helped you, right? तो हमें ये बातें पता है, we know the conditional sentences. हमें ये बात भी पता है कि conditional sentences में किस तरह की गलतियां करते हैं, right? Possible conditions वाले जितने भी होते हैं उसमें कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कंडीशंस जो है उसमें हमें कैसे, प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस बनाना है. वही कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट या नॉट पॉसिबल कंडीशन वाले सेंटेंसेस अगर पास्ट के हैं तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. वी ऑल नो दैट, राइट? सो देयर ऑब्वियसली हम हैड और वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का यूज कर रहे होते हैं हैड के साथ. तो ये दो बार वुड हैव तो कोई मतलब बनता नहीं. सो ऑब्वियसली द एरर इज इन दिस पार्ट. सो A has the error. Go to the next. Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts, again the same, level ABC, and if there is no error, go for the D1. Let's read it. Government stock offers safety, liquidity, and attractive returned for long duration. See, government stock offers, first part, safety, liquidity, and attractive returned. So what this returned is doing here with and के साथ जुड़ा हुआ है, right? Parallelism भी जानते ही होंगे. You must have, you know, studied parallelism, right?
तो इन सारी बातों से हमें ये बात समझ में आ रही है कि इस रिटर्न का कोई यहां जरूरत नहीं है. Attractive returns. That's what should be there. So government stock offers safety, liquidity, and attractive returns. So this is the error for long duration. So B part has the error. So very easy again. So if you're familiar, you can mark it immediately. See, time भी नहीं लगेगा तुम्हें, एक second. Immediately you'll pick it if it is in your practical uses. हाँ, problem सिर्फ तब हो सकती है जब हमने उसे मगअप करा हुआ है and we forgot and it all got messed up. समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला यहां लगेगा. That could be the problem, but otherwise there is no problem, right? Now, so the next question again, the instruction is the same, right? Each item has the section sentences of three underlined portion labeled as A, B, C, and if there is no error, mark T. That's what the instruction is. So read the question. Scrolling through thorough. Spelling is written. See, कई बार ऐसा भी होता है कि spelling is error and दोनों ही वर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है. अगर तो तुमने जो सही होगा यू रीडिंग दैट, यू डिडंट पे अटेंशन टू इट. दैट शुड नॉट हैपन, राइट? सो स्क्रॉलिंग थॉरो माय सोशल मीडिया टाइमलाइन, आई हावर्ड over a video of a minor road traffic accident, right? So thorough, anyway, you know that what is thorough? It talks about the details of something, right? So thorough, तो thorough के तो हम यहाँ पे होना नहीं चाहिए. Scrolling through from one side to other side, so through has to be there, right? So immediately we are familiar with all these two words. हाँ, अगर हमने इग्नोर कर दिया स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक को, हमने सही वाला पढ़ लिया, लिखा था गलत स्पेलिंग के साथ, तो ये गलती भी हो सकती है. So you have to be attentive in the exam, right? Otherwise you might miss it. हम रीड कर लिया हमने सही वाला क्योंकि थोड़ी सी स्पेलिंग में डिफरेंसेस थे. So that should not happen. So the A part has the error. Immediately you'll pick it again. Coming back to the next question, again the instruction is same, underlined, labeled at A, B, C, and if there is no error, mark D. So let's see which part has the error. The fascination with gold at least. The fascination with gold at least seems to be a case where traditional belief and modern finance would point the same way, right? So again यहाँ पे वैसी ही बात है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी. कई बार अगर तुमने थॉरो को ऐसे ही ओवरसी कर दिया और थ्रू पढ़ लिया, यू माइट मिस दैट एंड यूल मार्क नो एरर. उसी तरह से अगर इधर वर को मिस कर दिया और वर को वेर पढ़ लिया, so you might miss it and you'll mark no error. इस तरह से हमें attentive रहना है. यहाँ पे भी देखो वही प्रॉब्लम है. Seems to be a case where traditional belief नहीं, where it has to be WH1. So where traditional belief and modern finance would point the same way. तो where होना चाहिए, यहाँ where तो होना ही नहीं चाहिए. If reading fast, बहुत जल्दी में हो, प्रेशर भी होता है एग्जाम का, उस दरमियान अगर if you overlook it, this will be a blunder, right? इन्हीं को फिलहाल हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं कई बार. So that has to be removed and you have to be attentive. So then pick that B part has the error, that has the problem. Now going back to next. Again the questions are on the similar line, right? So see, again each item in this section has the sentences with three underlined parts A, B, C. So whichever has the error you mark that one, either or. If there is no error, mark T. Read the options. Evolutionary biology leave us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans. क्या देख रहे हैं हम? Evolutionary biology. So biology is singular or plural? What is this? Evolutionary. Evolutionary is an adjective anyway, right? Evolutionary biology leave us. No, leaves us. Simple, isn't it? So the moment you see evolutionary biology leaves us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans. So that's the error. A part has the problem और बाकी सब करेक्ट है. ठीक, सिंपल. ऐसी जगहों पे भी कई बार हो सकता है you might overlook it if you're in hurry or you're under pressure, in the exam pressure. So that should not happen. Otherwise the questions are very easy. If you're prepared and well prepared, it's very easy. Next one. Again, eighth question. Each section has again three parts, right? Labeled A, B, C. And which part has the error? You have to mark that or mark the D1 if there is no error. Read it. When everything starts working for you, you will find things are achieved and delivered. Things are achieved and delivered. Things are achieve. So जितने भी helping verbs हैं उनके साथ verb की first form.
We never use it anyway. Do you ever? Not at all, right? So all these helping verbs, is, am, are, was, were, has, have, had, these are the helping verbs. Do we ever use a first form of the verb with any of them? Not at all, right? So in all these helping verbs, not at all. So coming back to, so achieve, वैसे भी parallelism, if you know, तो delivered तो आगे दिख ही रहा है हमें. Delivered, achieve नहीं बल्कि achieved. So things are achieved and delivered. So that's how it is. Very easy, right? C part has the problem. Very easy questions. 10 seconds भी नहीं लगना इनको mark करने में. Coming back to the next one. Again, the instruction is the same. So ABC में से कोई भी mark करना है जिसमें error हो. If there's no error, you can mark the D option. So if I were you, I would not go for change of job. If I were you, I would not go for change of job. See, the moment you read it, if I were you, you know that this is again a conditional sentence, right? A conditional sentence, and we all are familiar with the conditional sentences. What all we have to keep in mind, right? So when we study, एक तो present case जो हमारे possible conditions हैं, उनके उनको represent करने वाले conditional sentences. The other one is present के case में ही if there are some contrary to fact conditions. Contrary to fact means which is not true, which is not possible, right? All kinds of these things. So that is all contrary to fact. इस तरह की conditions. So मैं इतनी बात समझ में आ रही है. If I were you, I would not. If I were a bird, I would fly to you. Something like that. इस तरह के sentences, right? So if I were you, I would not go for a change of job. So were is fine. Would is fine. इस तरह sentence बनाते हैं. यहाँ पे कोई problem नहीं है. I would not go for change of job. ठीक है. Sentence is fine. So there is no error, right, in this section. Now coming back to the next one. Again, A, B, C, and D. At the beginning of the 19th century, female literacy was extremely low, right? So if you know, in comparison to male literacy. So the moment you, if you're familiar with the word low, so is it a verb, adjective? What is this? So obviously, if you're familiar with this word, you'll be picking up immediately the problem, right? If you're not even familiar, you could read the sentence. At the beginning of the 19th century, the female literacy was extremely, doesn't make sense. Lower is a verb. Lower, lowered. But low is not an, lower is a verb. Lowered. But low is not a verb. So यहाँ पे ed का कोई मतलब नहीं है. There's a problem. So in comparison to male literacy. So the error is in B part. Right? Next. Coming back to next. Now, so these are the parts of speech questions which sometimes appear in our CDS paper, right? तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे होते हैं हम इनकी बात करते हैं थोड़ी सी. So he has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002. See, the moment you see since, that is underlined portion. और इसी के बारे में पूछ रहे हैं. इंस्ट्रक्शन देख लो. Each of the following sentences has a word or phrase underlined. Read the sentences carefully and find which part of speech the underlined word belongs to. Indicate your response on the answer sheet accordingly. Right? Underlined portion के बारे में हमें बताना है किस parts of speech से belong करता है. Right? And you have to mark that in the answer sheet. Now, coming back to here now, since. The moment you see since, you have studied, right? क्या क्या function हो सकते हैं since के? Since के functions के बारे में we are pretty much familiar. Since can be used in a sentence in three ways. One, preposition. Second, adverb of time. And third, it could be conjunction. These are the three ways, right? Since we can see the since in three forms. तीन तरह से तीन तरह का फंक्शन करता हुआ तीन तरह की प्लेसमेंट के साथ हमें सेंटेंस में since दिखता है और हम सब इस बात से familiar है. Pretty much we are familiar, right? So preposition में भी ये time से related बात कर रहा होता है when it is used as a preposition, right? You studied since childhood. हमने since और for तो childhood बचपन से पढ़ा हुआ है हमने, right? So we pretty much familiar with this. And दूसरा adverb of time में तो फिलहाल सीधे बात यही हो रही है कि adverb of time का adverb है, time की बात कर रहा होता है adverb की तरह. और conjunction, it is used to talk about the reason here. Since और for सब reason के लिए use होते हैं, as, right? तो इस तरह से वहाँ पे conjunction है. इसके बारे में हमने काफी पढ़ाई की है, right? Preposition के तौर पे जब ये use होता है, we all know this will either be a time denoting, be used with a time denoting word or a sentence.
which will denote anyway a time. किस तरह का time? Some point of time in past. Some point of time in past, starting from some point of time in past, from that time up till now, or up till some other time in future. Right? That's how it is. इसी को हम हिंदी में कहते हैं तब से अब तक, कंटिन्यूसली, राइट? एनीवे, दैट्स व्हाट द सेंस इज। ऐसे ही है, इतनी बातों से तो हम जब तक टाइम की बात कर रहा होता है ऐसे ही कुछ बात कर रहा होता है टाइम के सेंस में, और दो तरह से यूज होता है, वी ऑल नो दैट, राइट? बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ा तुमने, डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, पता नहीं सिंस यहाँ यूज होगा वहां यूज होगा, समथिंग समथिंग समथिंग, वी स्टडीड अ लॉट सिंस एंड फॉर, बट इट्स प्रीटी इजी, बहुत ही आसान है इसको। जैसे मान लो आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 2011, अब मैं जब बोल रहा हूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 2011, तो यहाँ पे हम 2011 तब से अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, अभी भी कंटिन्यू है, तो कहने का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम फ्रॉम दैट टाइम इन पास्ट अप टिल नाउ, सो ऑब्वियसली व्हाट विल बी यूज्ड हियर? सिंस 2011, आई हैव बीन टीचिंग English since I joined Faculty of Law, University of Delhi, right? So since I've joined, right? So again, since I joined, because this is a point of time in past, इसलिए since I have joined नहीं होगा। ये बातें भी हम खूब पढ़ते हैं बचपन में, रूल में भी ऐसे ही पढ़ते हो तुम, since के साथ वाला सेंटेंस have plus V3 नहीं होगा, kind of, right? So anyway, सो सिंस के बारे में अगर हम फेमिलियर हैं, हमने अच्छे से पढ़ाई की है, तो वी नो इट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, एज एन एडवर्ब, एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन के केस में ये ऑब्वियसली रीजन बता रहा होता है। क्या बताता है? रीजन। सिंस शी केम लेट शी वाज फाइंड, सिंस शी केम लेट शी वाज फाइंड, तो इसमें क्या है? रीजन बता रहा है, राइट? शी हैज बीन promoted twice since she had joined the company. She joined the company, she joined the company, right? She was Ravi was released from the jail in 2011. We haven't heard about him since, मतलब तब से अब तक तो हमने उसके बारे में कुछ सुना नहीं, राइट? यहाँ पे एडवर्ब है, तो इस तरह से ये एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन तीनों ही तरह से यूज होता है, वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस, राइट? तो इसी तरह से हमें पढ़ना भी होता है हर वर्ड, हर टर्म्स के बारे में, और पूरी कंप्लीट फेमिलियरिटी। अब आ जाओ हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सिंस 2002, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर एंड नाउन, राइट? तो ये तो तीन ही ढंग से यूज होता है, या तो एडवर्ब, या प्रेपोजिशन, या कंजंक्शन। सो प्रेपोजिशन कंजंक्शन तो ऑप्शन में ही नहीं है, राइट? एडजेक्टिव ये होता नहीं है। इंटेंसिफायर का मतलब यूजुअली, फाइनली, एब्सोल्युटली, एट ऑल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इंटेंसिफाई करते हैं, दे इंक्रीज द इंटेंसिटी, दोज वर्ड्स आर इंटेंसिफायर्स। तो ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं है सेंस के साथ। नाउन तो ये है नहीं फिलहाल, राइट? तो और वैसे भी ये तीन ही ढंग से फंक्शन करता है सेंटेंस में, अपनी प्लेसमेंट और सेंस के अकॉर्डिंग। थ्री फंक्शंस, थ्री नेम्स, तीनों नाम क्या है? प्रेपोजिशन, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड कंजंक्शन, दैट्स इट। दोनों है नहीं। वैसे ये यहाँ पे यूज हुआ है प्रेपोजिशन की तरह, राइट? सिंस 2002, लेकिन प्रेपोजिशन तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, और इस क्वेश्चन में मुझे जहां तक लगता है शायद ये पूरे को ही अंडरलाइन किया गया होगा, क्योंकि केवल सिंस को अंडरलाइन नहीं करेंगे। सिंपल रीजन बताता हूं मैं। जैसे मान लो मैं बोलूं इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर में, इन द कॉर्नर पूरा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन इन जो है वो एडवर्ब नहीं है, वो क्या है? प्रेपोजिशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप, राइट? सो इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, राइट? तो ये पूरा का पूरा जो प्रेपोजिशन प्लस आगे नाउन ये सब चीजें यूज हुई होती हैं, पूरे को हम एक साथ, क्योंकि ये प्लेस डिनोट कर रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल रहे हैं, राइट? इस तरह से बहुत बड़े बड़े फ्रेजेस होते हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं इस तरह से, राइट? अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या है? एडवर्ब, राइट? बिकॉज इट डिनोट्स अ प्लेस, राइट? लेकिन अलोंग जो है वो एडवर्ब नहीं है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। ऑन द सिमिलर लाइन, वैसे नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये सब एडवर्ब नहीं है, इंडिया इज नॉट एन एडवर्ब, इट्स अ नाउन, राइट? तो कहने का मतलब है उसी लाइन पे ये पूरा का पूरा केवल सेंस जो है एडवर्ब तो नहीं है, लेकिन पूरा सेंस 2002 अगर इन्होंने वो किया है, दैट कुड बी एन एडवर्ब, दैट्स मोस्ट, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो you'll mark that. Now, coming back to next, the man in dark blue is the one who made us win the match. Anyway, you read the sentence. So underlined portion is who. So who के grammatical profile क्या है? That is being asked here.
It's a relative pronoun, an interrogative pronoun, a relative pronoun, relative clause, right? Relative clause, interrogative pronoun, relative pronoun, and affirmative. These are the options. So relative pronoun you pretty much familiar of. So who क्या क्या हो सकता है, right? Interrogative pronoun, right? We all know who. It could be an adjective, interrogative adjective. It could be a relative pronoun. We all know that. ये जितने भी WH words हैं, ये किस किस तरह से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में हमें पता है. या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, राइट? हु आर यू, हु हैज डन दिस. इन सब जगहों पे हु क्या कर रहा है? एनीवे इट्स अ रिलेटिव, सॉरी इट्स अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. या फिर ये WH वर्ड्स में कई सारे हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करते हैं. फिलहाल यहां पे हम बात अगर करें, सो वी सी अ सेंटेंस वेयर रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से होता है हम सबको पता है, राइट? जैसे द बॉय, राइट, हु, जस्ट अ मिनट, who is sitting there is my friend. So now what do you see? Who is sitting there? Who का function क्या है यहाँ पे? Who only denotes this boy. Who denotes this boy. And इस boy को जिसके लिए भी relative pronoun use हुए होते हैं उनको इसका antecedent बोलते हैं. You must have studied, right? Antecedent. इफ यू सी एंटीसीडेंट, एंटे, एंटे का मतलब पहले वाला, हम सब जानते हैं. एंटेडिलुवियम पढ़ा है. एंटे बहुत सारे वर्ड्स हैं इस तरह से, राइट? इट्स अ रूट वर्ड, राइट? सो एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला. सो एंटीसीडेंट उसी को रेफर करने के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे होते हैं कहीं भी. तो यहां पे हमें दिख रहा है द वन. इट्स नॉट ओनली इंटरोगेटिव एनीथिंग, इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन. अब पूरी क्लॉज की बात तो वैसे भी नहीं हो रही है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा क्लॉज. तो कौन सा बचा हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ऑप्शन है लेकिन ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ है नहीं. तो बचा क्या हमारे पास? सी. A very easy option, right? Because we know about WH family, how they function. Going back to next. The most beautiful actor of the industry was awarded today. Right? ये ऑप्शन है हमारे पास. Okay, anyway, coming back to adjective. अब मोस्ट जो है ये क्या है ये बताना है हमें. ये एडजेक्टिव है, न्यूमरल है, एडवर्ब है, नाउन है. सो व्हाट इज दिस? वी ऑल नो मोस्ट इज सुपरलेटिव ऑफ मैनी एंड मच. ये दोनों का सुपरलेटिव होता है. मैनी मोर मोस्ट एंड मच मोर मोस्ट. We're pretty much familiar with this, right? So many talks about number and much talks about quantity. दोनों का superlative है most. So what most is doing here? Beautiful is an adjective. It's an adjective, right? Actor is a noun. Anyway, we all know that, right? So noun is being qualified by an adjective that is beautiful, and most is qualifying another adjective that is beautiful, right? So किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब. वी प्रीटी मच फेमिलियर, राइट? एक ही वर्ड कई बार अगर एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है. तो यहाँ पे मोस्ट इज एन एडवर्ब. मोस्ट इज एन एडवर्ब. अगर हम बात करें तो मोस्ट क्या है हमारा? इट्स यूज्ड एज एन एडवर्ब. नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? आज द कैप्टन. तो अब लेटेस्ट के बारे में बताना है हमें. इसकी क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल है? It's a relative pronoun, it's an adjective, it's an adverb, it's a adjectival clause. So क्या है? News is a noun and latest क्या कर रहा है? उसी को qualify कर रहा है, right? Late, later, इस तरह से late, later, latest, इस तरह से. So that's the reason you go for adjective anyway. So noun is being qualified here with an adjective. It's again a noun, right? Now coming back to next. Noticing the change in the behavior of the officer, the cadets returned to their position. Noticing the change in the behavior of the officer, the cadets returned to their positions. Now, so you have the option participle, present continuous, noun phrase, noun. See, ing form we see in our sentences either as a verb, either as a verb. Verb की तरह यूज हुआ है या तो हमें पता होगा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा होगा, या इट मे बी यूज्ड एज अ पार्टिसिपल और इट कुड बी यूज्ड एज अ gerund, right? ing form. That's how it is. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Noticing the change in the behavior of the officer,
द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। तो ये पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। अगर तुमने पार्टिसिपल पढ़ा होगा, हाउ द सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल्स, यू मस्ट बी नोइंग, राइट? पार्टिसिपल की मदद से किस तरह से सेंटेंसेस कंबाइंड होते हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार एग्जाम में, राइट? सो दिस इज पार्टिसिपल हियर। आई गिव यू एन एग्जांपल, डू दिस सेंटेंस। Right? A sentence I gave you. Walking through the front gate, a wasp stung him. So, is the sentence correct? इस तरह से sentences ऐड करते हैं हम. We see one subject here, a wasp, right? So that becomes the subject for both the sentences which has been combined. जिन sentences को हम जोड़ते हैं उसी का subject middle में use हुआ होता है. So उस तरह से अगर हम देखें तो this has the absurdity. A wasp was walking through the front gate, a wasp stung him. That doesn't make sense. It means sentence is not correct. So either it has to be walking through the front gate, he was stung by a wasp, या यहां पे होना चाहिए he was while he was, then this sentence becomes correct. So इस तरह से बहुत सारे पार्टिसिपल के थ्रू किस तरह से सेंटेंसेस एडेड होते हैं, इनके बारे में खूब पढ़ा होगा. तो अगर पार्टिसिपल पढ़ा है तो यू मस्ट बी अवेयर कि नोटिसिंग यहाँ पे क्या कर रहा है. व्हाट इज दिस डूइंग हियर? इट्स जस्ट पार्टिसिपल, राइट? It's a participle. Coming back to next. When he reached the department, the officials had left for meeting. When he reached the department, the officials had left for the meeting. So had left की grammatical profile के बारे में हमें यहाँ बताना है. So past perfect verb, past tense, dependent clause, independent clause. See, it's had left, past perfect verb. That's it, right? It's very easy anyway. We know the tenses, right? So had left, had is third form, and left, so had के साथ third form लगा हुआ है. It's past perfect. Coming back to next one. He has offered her another chance. He has offered her another chance. So what is this? Has offered. ये बताना है हमें. इसकी grammatical profile. Intransitive verb, past tense, perfect tense, transitive verb. Obviously, perfect tense. Has, have के साथ. If you use the third form of the verb, so it's completely, it's a perfect tense. Talks about completion of work. ये completion की बात करते हैं. So obviously completion of the task. It's a perfect tense. We know about the nature of the perfect tense and what kind of meaning it gives. Coming back to next one. The building is very ancient. The building is very ancient. अब इसके grammatical profile के बारे में बात करनी है. Transitive verb, intransitive verb, phrasal verb, auxiliary verb. Right? Most appropriate option you have to mark anyway. Ensure that. So transitive verb, intransitive verb, phrasal verb का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. Transitive, intransitive के बारे में हम जानते भी होंगे शायद. whom what वाली एक्सरसाइज की होगी बचपन में, चाइल्डहुड में. We studied what is transitive verb, what is intransitive. Transitive, trans is another word, you know. It's root word, trans. Trans का मतलब from one side to other side. Trans यमुना, trans Atlantic, transfer. इस तरह के वर्ड देखें. वैसे ट्रांस एक तरफ से दूसरी तरफ, बोथ साइड, इस तरह से जो हो, दैट्स ट्रांस. सो ट्रांसिटिव का सीधा मतलब वो सारी वर्ब्स जो दैट नॉट ओनली अफेक्ट द सब्जेक्ट but it also affects the object. So that is transitive verb. Intransitive, you know that its effect is limited to the subject only. So transitive and transitive की यहाँ तो बात हो नहीं रही है फिलहाल. Is verb है क्या? See, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, intransitive and auxiliary, right? So लेकिन हमें चूंकि immediately हम nature की बात करें अगर तो grammatical profile की, तो is an auxiliary verb. So we'll mark auxiliary. That is most near. That's most near option. Coming back to next. So again, you see the other one. Hooray! What a scintillating beauty the landscape is. Again, you know the interjection, you know, words. So anyway, it's interjection. So you pretty much anyway familiar. It's interjection. The next one is Ravi was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of fours and sixes. तो because की बात करनी है इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की. इट्स अ कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब एंड कॉज. सो कॉज का तो कोई मतलब नहीं है, एडवर्ब है या इंटरजेक्शन है या
conjunction. It's not introduction anyway, we all know that because it's a conjunction, right? So that's how it is. As a since भी conjunction अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की. So then now अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, क्योंकि इसके बाद आज के बाद विल ओनली बी प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट? तो इसलिए हमने तीनों सेक्शन, अभी तक हम वोकैब की बात कर चुके हैं, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, व्हाट कुड बी द बेस्ट अप्रोच, हाउ इट मस्ट बी स्टडीड, एंड देन दूसरा हमने करेक्ट यूसेज ग्रामर की बातें की, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह से पढ़ना है. We have seen that. And third is comprehension section, that is reading comprehension section. As name suggests, you have to read and comprehend and then answer. There are 1 or 2, 3, 4 passages. It differs every time in the exam. So reading comprehension करने के लिए इतना हमें समझ में आ रहा है, we must be familiar with reading. That we read an article, a written passage, and be able to comprehend it so that we can answer the questions. एंड क्वेश्चन से भी हमारी फेमिलियरिटी पहले से ही रहना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन. इट्स नॉट जस्ट दैट रैंडमली यू जस्ट गो एंड रीड इट एन आंसर जो आया नहीं आया, जैसे कि हम 11th 12th या स्कूल डेज में किया करते थे. उस तरह से यहाँ नहीं करना है. स्कूल टाइम में होता क्या है, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर सम वर्ड्स वेयर एवर अ सिंगल वर्ड मैचेस इन द पैसेज, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, एंड जस्ट राइट द आंसर, राइट? दैट यूज्ड टू बी द केस. वी ऑल गॉट द मार्क एनीवे, राइट? एवरीबॉडी, स्कूल में सब पास होते हैं. वहां कोई ऐसा कंपटीशन जैसी बात नहीं है, वहां मेरिट जैसी बात नहीं है, वहां रैंक जैसी कोई बात नहीं है. तो कंपटीशन में तो ऐसा है, राइट? कंपटीशन में किसी तरह से गिरते पड़ते 33% आ गए तो यू पास, ऐसा नहीं है. हियर यू विल बी आउट, सिंपल, राइट? सो हियर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेल प्रिपेयर्ड सो दैट वी आंसर एवरी क्वेश्चन एंड दैट टू विद 100% accuracy. That should be our anyway aim. So यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, phobia, regression, skimming, mind map. Anyways, when we read, reading की जब मैं बात कर रहा हूँ, how to read, you must be knowing how to read. So obviously we all know how to read, right? But when we read a piece of writing, are we able to comprehend it in a proper manner, even in a quick reading? यहाँ पे मैंने skimming लिखा है, मैंने यहाँ पे scanning, reading ये नहीं लिखा है, skimming लिखा है. स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन तो यू जस्ट सी क्विकली द स्कैनिंग. रीडिंग में पता है प्रॉपरली, राइट? स्किमिंग, यू जस्ट हैव टू स्किम विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड ऑल. कीवर्ड्स वगैरह का ध्यान में रखते हुए यू जस्ट हैव टू क्विकली skim it, skim the passage, and you must get an idea of it, right? So you must be familiar how to read, right? Question type से भी हम familiar होने चाहिए कि एक बार you just have keep one glance on the question and you know what type of questions are there on the basis of this passage. इतनी बार में हमें समझ में आ जाने चाहिए questions. कितने direct questions हैं, कितने indirect questions हैं, ये सारी बातें we must be able to gauge in one glance, right? तो स्किमिंग कैसे करना है, रिग्रेशन क्या है, कैरी बैक क्या कहते हैं इसको. सी व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग, हमें पता है हमारी आईबॉल्स किस तरह से मूव करती हैं और कितने वर्ड्स हम कितने लेटर्स एक बार में देख पाते हैं. इफ आई एम फोकसिंग ऑन द सीरियस वर्ड, अगर मैं सीरियस पे ध्यान दे रहा हूं तो ऑब्वियसली आसपास अगर मैं पेन ले जाओगे तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी दैट प्रॉपरली, वो थोड़ा सा ब्लर सा हो जाएगा. You will not be able to pay attention to that. So there are a certain words, a chunk of words, उतने पे ही we can concentrate at one time पढ़ते समय. That's what it happens, right? Our eyeballs are concentrated there when we are reading, right? So you just have to see. And you have to increase that, right? So that keywords notice करते हुए you go ahead, you go further, little faster. इसकी practice करनी होती है, इस पे time लगता है. हमने थोड़ा सा बताया, you just go and start practicing today. किस तरह से क्या पॉसिबल है, कितने chunk of words you able to see, कितने group of words you able to see while reading when you concentrating on one word, right? कितनी देर लग रहा है, I mean how you doing that? Are we able to use your eyeballs as a pointer quickly? क्या पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? अगर चंक चंक में पड़ता है हमारे आंख, क्योंकि obviously our eyes what they do, they see something and then send the message to our brain. वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेज रही होती हैं, देन आवर ब्रेन एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड्स इट. ये प्रोसेस है एक दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन रिपीटेडली. तो जितनी तेजी के साथ तुम आगे बढ़ते हो, इसीलिए अचानक अगर आगे बढ़ जाओ ऐसे, तो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन और टू लाइंस. एंड व्हाट हैपेंस, दैट्स द रीजन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग वेरी फास्ट, यू डोंट कॉम्प्रिहेंड इट, और बार बार हमें पीछे जाना पड़ता है. So we have to do regression. We go back.
राइट। कैरी बैक इसी को बोलते हैं, रेग्रेशन इसी को बोलते हैं। तो इस ये प्रैक्टिस से ये चीजें एनहांस हो जाती हैं कि यू नो फास्टर रीडिंग, जो आईबॉल्स है वो पॉइंटर की तरह काम करती रहती हैं, दे स्टार्ट पिकिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द चंक, राइट। इट कीप्स हैपनिंग, इट कम्स विद प्रैक्टिस एनीवे। स्किमिंग, so एक लेवल तक आ जाए, यू जस्ट स्किम द पैसेज एंड यू गेट द कीवर्ड्स, the more important words of that passage, that paragraph, and you're able to do the mind map, how it is going, you're able to keep that in mind, all the kind of transitions happening in between. Transitional words की बात करेंगे हम, यहाँ पे लिखा ना transitional words, that actually gives us a very good help in understanding a passage, understanding a comprehension, reading comprehension passage, right? How the passage, how the meaning, how the context is moving from here to there, how it's going further. It's kind of, it works as a bridge, it works as a bridge from one idea to other idea, because there will be many ideas which will be anyway synchronized in a passage, in a paragraph. Paragraph में क्या होता है, बहुत सारे ideas होते हैं. There will be one single main idea and others will be supporting ideas, right? और वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा होता है. There might be some similarity, some addition, some contradiction, everything will be happening. और ये सब किन की मदद से होता है, ट्रांजिशनल वर्ड की मदद से. तो अगर हमें इन सब से फेमिलियरिटी है तो स्किमिंग अपने आप आसान हो जाती है, right? So you just quickly skim the passage and get the gist of it, get the context of it, get the main idea of it, get the summary of it, right? If you're able to summarize it after doing the skimming, and it means you did the mind map. Then planned and guided reading होता कैसे है, enhance कैसे होगा, if you do little planned and guided reading as per the requirement of the एग्जाम के रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर प्लान्ड और गाइडेड रीडिंग करो तो इस चीज में एनहांसमेंट होता है. ऑब्वियसली क्वेश्चन टाइप से भी हमारी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, इसीलिए नीचे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन टाइप्स. यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर डायरेक्टली एक्सप्रेसली हमारे पैसेज में मेंशन्ड है, वो आसान क्वेश्चंस हैं, राइट. यू कैन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और रीड द पैसेज फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे क्वेश्चंस के लिए आसानी से हमें सब फटाफट ढूंढ लेंगे हम, राइट. इट्स गिवन इन द पैसेज एनीवे. ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, विच ऑफ द, लेकिन ये भी कई बार घुमाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर नॉट ट्रू, right? Now, which of the following options the author is most likely not agree with in the context of the passage? तो इतने बड़ा इंस्ट्रक्शन और उसके बाद नॉट अग्री विद कर दिया तो स्टूडेंट्स कई बार इधर उधर घूम भी जाते हैं. So you have to be ready with all these things, question types, उनकी language, उनके instructions, be familiar with this so that immediately you go there on the keywords and you don't commit that mistake, right? So question types से familiarity हमारी जरूरी है, and planned and guided reading has to be done, and then transitional words के साथ हमारी अच्छी familiarity. हम आगे बात करेंगे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, एंड देन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आई विल शो यू दैट ऑल प्रैक्टिकली. So, किस तरह से हमें मदद कर रहे हैं मेन आइडिया समझने में, सपोर्टिंग आइडिया समझने में, उनका ट्रांजिशन समझने में, हाउ द फ्लो इज मेंटेन्ड इन द पैसेज, हाउ द आइडिया इज फ्लोइंग, हाउ द मेन आइडिया इज एक्चुअली फ्लोइंग, हाउ इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड, किस तरह से प्रोग्रेसेस फर्दर एंड हाउ इट गॉट कंक्लूडेड. तो इसके साथ साथ यू विल बी मूविंग with the help of transitional words. So obviously, if you know that all, then you identify the main idea, central idea, and even the supporting idea in the passages, right? And it makes complete sense to you and how it's traveling, how it's progressing further the passage, how it's getting towards conclusion, and what idea was being discussed. If there was some transition in between, there was some contradiction in between, there was something else introduced in between, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, किस तरह से, किन वर्ड्स की मदद से, व्हाट वर द ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज्ड, यू नो एवरीथिंग. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर इमीडिएट नहीं आया तो एटलीस्ट यू नो वेयर टू गो बैक, क्योंकि इन सब से हमारी फेमिलियरिटी है, हमें पता है व्हाट आर द ट्रांजिशनल वर्ड्स, वो क्या चेंजेस लाते हैं, उनकी क्या मतलब होते हैं, कितने ट्रांजिशनल वर्ड्स जो एडिशन के लिए यूज होते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होते हैं, वी नो एवरीथिंग, राइट, जो टाइम के लिए यूज होते हैं. इफ यू फेमिलियर विद दिस ऑल, so the passage will definitely make sense to you, even if you're not very familiar with the topic, with the subject matter. Even then, you'll be able to get the gist of it. काम भर का हमें समझ में आएगा, and we'll be able to answer that. So passages वाले questions, you just have to keep in mind this thing. हम थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे आगे. आगे we'll start with this. These are the transitional words. So इस तरह से हम बातें करना शुरू करेंगे. That's all. आज के लिए इतना ही अभी के लिए. Now after around 5 or 10 minutes, your maths class will start. That's all for today. Thank you so much.